I find this a very funny question because लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मुझे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और इलेक्शन के दौरान अपने मुखालिफ का तारीफ ही करूं, तनकीद ना करूं। मैं तालियां उनको बुझा दूं और उम्मीद रखे कि मुझे वोट पड़ेगा। मैंने ज़रूर जो उनका कुठाया है उनको भी मेरे ख्याल में मानना चाहिए कि जो गलतियां हुए हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उनके अपने फैसले हैं। जो उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बनता है, ये जमहूरियत का असूल है। ख़ास तौर पे इलेक्शन के दौरान तो हमारा ज़िम्मेदारी है, ये हमारा काम है कि उनकी जो कोताहियाँ हैं, उनमें उन्होंने जो गलतियाँ किया हैं, उनमें उनके पॉलिसीज़ पे जो हमारा एतराज़ात हैं उस पर हम जोर दें, उस पर हम हाईलाइट करें। अब जहाँ तक आपकी दूसरी सवाल है, अगर पाकिस्तान के अवाम मुझे मैंडेट देते तो फिर बिल्कुल अब मैं कहता कि नहीं, आप मुझे वज़ीर आज़म बनाएं। अब मुझे वो मैंडेट नहीं दिया गया। जहाँ तक मुस्लिम लीग का पॉलिसीज़ के सवाल है, ज़रूर हमारा मुख्तलिफ पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ राय होगा, मगर पार्लियामान की खूबसूरती ये है, जमहूरियत की खूबसूरती ये है कि आप अपना राय रखते हो, मैं अपना राय रखता हूँ। आप समझते हैं कि आपका सबसे बेस्ट राय है, सोल्यूशन है किसी एक मसला का। मैं समझता हूँ कि मेरा राय, मेरा मौक़िफ़ सबसे बेस्ट सोल्यूशन है किसी मसला का। हो सकता है कि आपका राय से हो सकता है कि मेरा राय से हो। उससे भी ज़्यादा मुमकिन ये है कि शायद मेरा राय और आपके राय के दरमियान में जो राय है वो सबसे बेस्ट हल हो उस मसला का। तो पार्लियामान का, जमहूरियत का ये एक तरीका है कि हम पार्लियामान में और पार्लियामानी जमहूरियत में हिस्सा लेते हैं। तो अगर कंसेंसस की बुनियाद पे हम फ़ैसले करते हैं तो मेरी उम्मीद है कि हम पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को एड्रेस कर सकेंगे। अगर हम पाकिस्तान के अवाम के जो बुनियादी मसले हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते तो उसका नुकसान ना सिर्फ एक सियासी जमात का होगा, उसका नुकसान इस मुल्क का होगा। शुक्रिया। बिलावल साहब, ये बताइएगा, आपने अपनी पूरी कैंपेन जो चलाई, आपने पहले मंशूर भी दिया। हमने देखा कि माजी में पंजाब आपका गढ़ होता था, लेकिन आज पंजाब में आपको चंद सीटें मिलती हैं। तो यही मफामत की पॉलिसी पहले भी आपका सियासी नुकसान कर चुकी है। क्या अब आप समझते हैं कि जो आपने जियाले को थोड़ा जगाया था, क्या वो जियाला फिर आपके मंशूर के साथ खड़ा होगा? आप जो, अगर मैं सिर्फ अपने लिए सोचता ना तो बड़ा आसान होता। मैं इधर खामोश होकर बैठ जाता, मैं कहता खान जाने, मियाँ साहिबान जाने, वो हुकूमत बनाए, मैं नहीं करता। लेकिन आप मुझे बताएं कि हालात क्या है इस मुल्क में। बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, कराची की सूरत हाल क्या है, सूबा पंजाब, सूबा पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है। बिल्कुल मेरा फ़ायदा है। मैं इस पॉलिटिकल सिचुएशन में अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ब्लैकमेल करना चाहती थी तो हम पीटीआई को भी और नून लीग को कहते कि आप हमें बना दे, वरना ये नहीं होता। मगर क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करेगा? क्या वो पाकिस्तान के इश्यूज जो महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी से, उसका कोई हल निकलेगा? ये मुफाहमत नहीं है, ये पाकिस्तान की मोहब्बत है, ये पाकिस्तान के अवाम के हम सोच रहे हैं। ज़रूर मेरा इसमें सियासी नुकसान होगा, मगर आपने हर मौक़िफ़ पे ये सोचना है कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ मेरा सियासत अहमियत रखता है, मेरा अपने आप को हर कीमत पे किसी कुर्सी पे बिठाने इस मसाइल का हल है, या इस निज़ाम को जिसके लिए हमने शहादतें दी, जिसके लिए मेरे कारकुनों ने, मेरे ख़ानदान ने, मेरा पार्टी ने शहादतें दी, इस निज़ाम को हम चलाएं। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्पेस है पंजाब में, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, और इस साजिश जो है वो इस 2024 के इलेक्शन में मौजूद था, वो एक अमल जारी है। मगर मैंने आपको कहा था ना, मैंने वालिद साहब से कहा इस चीज़ का फ़ैसला मुझे दे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो इस इलेक्शन में करवाया गया उसका फ़ैसला होना पड़ेगा।
میں یہ نہیں امید رکھ سکتا اپنے پارٹی کے ساتھ کہ ہم ہر بار ان کو کہیں کہ ہم جمہوریت کے خاطر ہر چیز کے خاطر اور بار بار ہمارے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جائے. اور آخر میں جو تمام سیاسی جماعتیں سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس الیکشن میں اب کسی کوئی رہا نہیں نا جو 30 سال سے صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی شکایت ہے, جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. آج آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کیسے اور کیوں فارم 45 پولنگ اسٹیشن سے ملتے ہیں؟ اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جد و جہد تھی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواؤ, الیکشن ریفارمز کروائے, اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے مشرف کے دور الیکٹرل ریفارمز کرواتے ہوئے آپ کا فارم 45 کا رزلٹ پولنگ اسٹیشن سے نکلوا دیا. آپ کو پتہ ہے کہ انٹرم حکومت میں جو کنسنسس کا فارمولا تھا وہ کیسے ہوا, تاکہ کوئی بائس سیٹ اپ نہ آئے, میں اپنی مرضی سے نہ کروں, ہم مل بیٹھ کے اپوزیشن کی بات کریں. وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ امینڈمنٹ لے کر آئے اور ہمارا حکومت تھا. ہم امینڈمنٹ نہیں لے کر آتے 2013 کے الیکشن سے پہلے تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن, اپنا مرضی کا انٹرم گورنمنٹ, اور ہم بھی دھاندلی بھی کر سکتے تھے. لیکن ہم نے وہ ریفارم اپنے دور میں لے کر آیا کہ ہم اپوائنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. ہم انٹرم گورنمنٹ نہیں کریں گے, پی ایم اور لیڈر آف دی اپوزیشن مل کے کریں گے. کس نے کہا پی ٹی آئی کو کہ میدان چھوڑے؟ کس نے کہا ان کو کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ چھوڑے؟ کہ راجہ ریاض اور شہباز شریف صاحب مل کے انٹرم گورنمنٹ بنائیں گے, اپوائنٹمنٹس کریں گے, تو کہیں نہ کہیں تو کچھ گڑبڑ ہوگا. اب آپ چاہتے ہو پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ میں انتہا پسندی انتہا پسند والا سیاست کروں, وہ تو نہیں ہو سکتا. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیریس جماعت ہے. میں نے اس کیمپین میں اور اپنا سیاست میں ثابت کر دیا ہے کہ باقی سیاستدان مجھ سے عمر میں ضرور بڑے ہوں گے, مگر پاکستان کے عوام یہ مجھ سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ میں اپنی بینیفٹ دیکھتے ہوئے کوئی ایکسٹریم پوزیشن لوں گا. صاحب یہ بتائیے گا. بلاول صاحب ایک حصہ تو آپ نے جواب دے دیا ابھی, لیکن اسی کے ساتھ سپلیمنٹری یہ ہے کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سازش ہوئی. ایک چیز بتائیے گا کہ یہ سازش کس نے کی؟ اگر مینلی اس میں کہیں پہ آپ کو رشتے دار نظر آتی ہے تو آپ نے انہیں کے ساتھ بیٹھنا ہے. پھر جن تحفظات کی آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ نے صدر زرداری صاحب کے سامنے رکھا ہے, تو وہ تحفظات جو ثابت ہو جاتے ہیں, وہ تمام جو آپ کے خدشات ہیں وہ ثابت ہو جاتے ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ایشوز اٹھائے گئے ہیں, ہم نے الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے رکھا, ہم نے الیکشن کمیشن کو لکھتے رہے جو بھی ہمارا اعتراضات ہیں. والد صاحب سے اس لیے میں فیصلہ چاہتا ہوں کہ والد صاحب نے سی سی کو یہ یقین دلوانی دلائی الیکشن کے دوران کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملے گا, اور میرے لوگوں کا اعتراضات ہے اس پہ تو وہ ضرور اٹھایا جائے گا. جہاں تک اگر ان اعتراضات کی وہ ان کو ہم ایڈریس کیسے کریں گے, ایڈریس تو اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ آخر کار پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آئیں اور اس قسم کا قانون سازی کریں, اس قسم کا الیکٹورل ریفارمز پاس کریں جس سے آگے جا کے کوئی الیکشن میں نہ میں انگلی اٹھا سکے نہ کوئی اور انگلی اٹھا سکے. یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ایڈریس کریں. PPI, we just had a press conference around the corner. They've merged with the NWN, which gives them access to a proportion of the reserve seats, and have demanded a recount in 55 contentious seats. And they say that this will give them an overall majority and enable them to form government, given the probability that many of the independent seats will go with PPI. What's your assessment of this calculation and how
I think it's extremely unrealistic. And I think that, unfortunately, the PTI has made it a habit. I'm sure you've heard the expression of the man who cried wolf. Now, the PTI has cried wolf in every single election, despite the fact that it is a historical reality and a historical fact that in a majority of these elections where they've cried wolf, the rigging has been done in their favor, not against them. We all remember 35 punches and how after destabilizing this country, doing dharnas, protests, long march, damaging our fragile democracy, PTI said that, oh, that was a political statement. I don't doubt that they will, that they aren't concerns. I also have my concerns, as I've expressed in this press conference. But there are forums for those concerns to be addressed. And if at those forums those concerns are addressed, even if the seats change up or down a little bit, I don't think any political party will be in a position to form government alone. The PTI themselves have said that they're not willing to talk to any political party. So from this statement, it is obvious that they are not interested in forming a government, in creating an environment of political stability. They would like to continue an extreme populist politics where they want to play the role of spoiler. They want to delegitimize as many democratic processes as possible. And they believe it's to their political benefit to spread chaos in this country. You will be aware that the challenge of this sort of populism is not unique to Pakistan. We have now come to a point where even the democratic system in America is being challenged along the same playbook, where whether you have facts or you don't have facts on your side, you accuse and repeat and repeat and repeat the message of rigging, rigging, rigging. So you delegitimize the democratic process. You delegitimize democratic institutions. And once the populace delegitimizes these institutions, then they manage to whip up such a sentiment within the country that allows them not only to be part of a government, to form government, but then to use that government to undermine the very institutions that they now lead. While this is a challenge all over the world, Pakistan's fragile democracy, where we have seen 50% of our rule under direct dictatorship, is finding it very difficult to cope and withstand this populist challenge. It is my belief that this populist challenge must be met democratically and politically, and that the only answer to undemocratic challenges is democracy, more democracy, more democracy, and more democracy. If the government that is to be formed decides that they are to respond to anti-democratic populism in an anti-democratic manner, if they're going to respond to extreme politics or extreme populist politics with their own extreme populist politics, then we're in a vicious cycle. And the consequences of this approach will be borne by the people of Pakistan. Our economy is facing a severe crisis. Our security situation is volatile. We have a whole host of challenges. And
while I think this sort of no country can afford this sort of populist anti-democratic challenge, certainly Pakistan can't afford this at this time. It'll be my effort within Parliament, as I don't have a mandate to form my own government, to fight for political stability and make an effort that better sense prevails, and that both political parties, whether it is the now MWM in Parliament or Muslim League Nawaz or other political parties, so it'll be my constant effort to convince all sides that politics should remain within a democratic space, that we should conduct ourselves in a manner that strengthens civilian and democratic institutions, and not for our own short-sighted political gains damage not only Pakistan's democracy but Pakistan's economy and Pakistan's federation. Last question ji, Solanki sahab. चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि कराची एमक्यूएम के हवाले चेयरमैन साहब कराची एमक्यूएम के हवाले करने का पहले तजुर्बा हो चुका हुआ है। एमक्यूएम ने बोरी बंद लाशों के अलावा, बंदाखोरी के अलावा, बदअमनी के अलावा कुछ नहीं दिया। पिछली असेंबली में 7 नशस्तें थी, अब 17 नशस्तें दी गई हैं। तो आप एक ये बताएं कि एमक्यूएम के मैंडेट को तस्लीम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि ये जनवन नशस्तें हैं एमक्यूएम की, और दूसरा कि अब दोबारा बोरी बंद लाशें नहीं उठानी पड़ेंगी आपको? मैंने कहा तो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एतराज़ात है, मुझे फैसला करके दें। उस फैसला में एक सवाल मेरा ये होगा कि एमक्यूएम का 18 सीटें रियली, एंड जो आपने कहा यही हमारा कंसर्न है, बिकॉज इस इलेक्शन में एमक्यूएम ने वायलेंस अपनाया। इस इलेक्शन में उनके जो दहशतगर्दी में मुलव्वस लोग थे, मुझे बताया गया, मुझे कोई सबूत नहीं है इसका, मुझे अब तफसील में जाना पड़ेगा। मुझे तो बताया गया कि जो इनके दहशतगर्द मिलिटेंट एलिमेंट थे उनको भी आज़ाद करवाया गया इस इलेक्शन में, और हमारे कैंडिडेट्स पे हमले हुए, उनके ऑफिसेस पे हमले हुए, उनकी गाड़ियों को चलाया गया, हमारे लोगों पे फायरिंग हुआ। आप 18 सीट्स इनको दें, आप 50 सीट्स इनको दें, आप 1000 सीट्स उनको दें, हम कराची के अमन पे, कराची की तरक्की पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम उनको भी ये पैगाम देते हैं, आप सियासत करो, इंतहा पसंदी का सियासत ना करो, नफ़रत और तक़सीम की सियासत को दफन करो, लिसानी बुनियादों पे, नफ़रत की बुनियाद पे मेरे शहर को तक़सीम हम आपको नहीं करने देंगे। Thank you. Are we done? Yeah. Thank you, everyone. I think we're good. We've covered all the points. Thank you, guys. बिलावल साहब आपको मुबारक हो। बिलावल साहब मुबारक हो, लेकिन सवाल जो है ना सियासी नुकसान वाला जो हम कर रहे थे वो इसी सेंस में, वो हमें भी पता है, वो आपकी हमारे सवाल रह गए। दोबारा कर लेंगे कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये जमहूरियत जो है बड़ी, और 15 साल बाद 3 पार्लियामेंट ने मुद्दत पूरी की, लेकिन जमहूरियत आज फिर कमज़ोर है। उस कमज़ोरी की वजह क्या ये